Hi everyone. Hi Vaibhav. Hi Karan. Hi Nikhil. Radhe Radhe Jagrati. So hi guys, this is Sheetal Chaudhary, your accounts master teacher, and I welcome you all to Vedantu Commerce. We all are here for a better future. So, this is class 11th accountancy session, and let's start this session with some positive thoughts. So, don't be pushed by your problems, be led by your dreams. So, this is your today's schedule, guys. Hi विकास, एग्जाम है तो दुखी होने की वाली बात क्या है? इसमें तो खुश होना चाहिए कि परसों एग्जाम है, फिर आपको टेंशन फ्री हो जाओगे आप. All the best, Jagriti. My wishes are always there with you. So ये है आपका schedule. After my session, we will be having class 12th account session at 6 p.m. and economics session at 7 p.m. with Neha ma'am. So guys, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then please take a moment to subscribe to our channel Vedantu Commerce and also do like this video and share this. अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. And for the upcoming notes and events, you can also join our official Telegram group Vedantu Commerce, जहां पर आपको सारे के सारे notes PDF फॉर्म में प्रोवाइड होंगे. Hi मेघना, Hi Priyanshu, Hi Jagriti. Closing entry of salary and depreciation. This is not called as closing entry. There is only one entry for salary and depreciation. The journal entry will be P&L account debit to salary. पहले आप रिकॉर्ड करोगे salary to cash when you will pay it, and then you will transfer it to P&L account, P&L to salary. Same for depreciation and advertisement. Advertisement to cash, salary to cash, and then P&L to advertisement, P&L to salary. विकास, अगर डिसऑनर समझ नहीं आ रहा तो हम ऑलरेडी वो चैप्टर कवर कर चुके हैं, आप हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस जाके देख सकते हैं. So, are you guys interested in scoring good marks? You want to go further with the best grades ever? क्या आपको सबसे अच्छे मार्क्स लाने हैं? So, if you guys want to go further with the best grades, with the best scores, then you all can take Vedantu Commerce Pro Subscription. Meghna, right now please focus on the session. पहले इस chapter पे ध्यान देते हैं and you guys can ask your doubts related to other chapters at the end of the session. In the starting, in between the session, I will not take doubts related to any other chapter because that creates a lot of disturbance. अगर आपको किसी और चैप्टर से रिलेटेड डाउट है तो आप सेशन के एंड पर पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं. So in this pro subscription we are providing you all these subject. आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, चाहे वो मैथ्स हो, अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडीज हो या इकोनॉमिक्स हो. उसके बाद we are providing you more than 2000 hours of live online classes. आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस देखो वेदांतु प्लेटफॉर्म पे सारे सब्जेक्ट की. आप अपने सारे डाउट्स ऑन दी स्पॉट पूछ सकते हो टीचर्स पे बिकॉज द क्लासेस विल बी लाइव. हाय सलोनी, हाय अदिति. Along with that, we are a pool of 10 plus teachers having more than 5 years of experience. So you can also learn from their experience. अगर इतनी highly qualified teachers आपको पढ़ाएंगी तो आप भी उनके experience से बहुत कुछ सीख सकते हैं. Along with that, all these teachers will work on your areas of improvement. सारी की सारी teachers आपके कमियों पर काम करेंगी. We will work on your weakness.
हाय प्रियांशु, मैं एकदम बढ़िया हूँ। आदित्य, आपका क्या हाल चाल है? And we will also provide you regular assignments for your practice. We will conduct regular tests for you. And the most important thing, all the classes will be conducted in English only. So the actual price of this Pro subscription is 3499 for 1 month. But right now we are providing you flat 20% discount, and after discount you have to pay only 2799. So आपको कितना पे करना है? 2799 only. So go and get this Pro subscription right now at flat 20% discount by using my code SCPRO. And the new batches are starting from 30th March. नई क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 30th मार्च से. So before that, go and take your Pro subscription. Okay, Saloni. प्रियांशु 30th मार्च से नई क्लास 12 स्टार्ट हो जाएगी. So today we are going to do another chapter in which we will be discussing previous year question. आज हम नया चैप्टर करने वाले हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पेपर में आते हैं. Till now we have discussed 2 chapters in this series, depreciation chapter and ledger chapter. Those who have not watched that class, please go watch it because we have discussed some important questions in those sessions and they will be really helping you. पूछिए निखिल. एक बात बताओ. पूछिए क्या बात बतानी है? So today we are going to do the chapter bank reconciliation statement. Vaibhav, you can ask it later, please. Right now, please focus on the session. Rajiv, you can ask it later. Study trending पे क्यों नहीं आती YouTube पे? I don't have any idea about YouTube analytics. YouTube वालों को पता होगा. Hi Himani, I am all good. Hi Karan. So, bank reconciliation statement is one of the important chapter, and I can assure you that one question will definitely come from this chapter. एक क्वेश्चन पक्का आएगा इस चैप्टर से, either for 4 marks or 6 marks. तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाता है मतलब आपके 4 या 6 नंबर तो पक्के हो गए हैं. So let's start this session now. And it's time to start. It's time to start the session. Hi Arzu, sorry, मैंने आपका मैसेज देखा नहीं. So starting with the question number 1. And this is our first question. ये है हमारा पहला question. Any legion from SS? Aditya, if I will get this message again, we have to block you. So please don't write this message again in the chat box. If you have any doubt, then you can only write that one, but not any unnecessary message. Yes, Imani, it is not applicable for class 11th now. Ronak sir, please look at Aditya Raj. So, starting with the question, the balance as per passbook is given, that is 70,000. हमें passbook का balance given है, that is 70,000. Now, if the balance of passbook is given, it means that we have to make changes in the passbook. किसका balance given है? Passbook का balance given है. So we will be making changes in the passbook only. हमें किसमें changes करने हैं? Passbook में करने हैं. And if nothing is mentioned that whether it is favorable balance or unfavorable balance, so we will assume that favorable balance is given. अगर कुछ भी नहीं बोला कि ये favorable है या unfavorable है, तो हम लोग क्या मानेंगे कि that is favorable balance.
Now starting with the transaction first. Before that, let me tell you, we will be using our hands. Your left hand should be your cash book. Your right hand should be your passbook. Left hand cash book है, right hand passbook है. Check for 5,000 were deposited in the bank in the month of July. Check of 5,000 deposited in the bank. Your cash book is increased by 5,000. But only check of 1,000 were credited by bank. In the passbook, only 1,000 is credited. So can you see there is difference of 4,000? There is difference of 4,000 and we have to make changes in the passbook. So what we will do in passbook? We will add in the passbook 4,000. हम क्या करेंगे? Add करेंगे 4,000. Meghna, there are 50-50 chances for both cash book and passbook. इंपॉर्टेंट पर ध्यान मत दो बच्चों. नाउ देर इज नो टाइम कि आप ये देखो कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देना. योर कॉन्सेप्ट शुड बी स्ट्रांग. अगर आप इंपॉर्टेंट के चक्कर में रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा. Then coming on to the second transaction. Hi Ashwani. Coming to the second transaction. Checks issued for 33,000 in July, out of which check of 13,800 was presented in the payment. कितने के चेक इशू हुए? 13,000 के. Just a minute. This is cash book, this is passbook. आपने कितने के चेक इशू किए? 33,000. From cash book, 33,000 is decreased. From cash book, 33,000 is subtracted. But in passbook, only 13,800 is presented. passbook में कितना present हुआ है? सिर्फ 13,800. So there is difference. There is difference of 19,200, and what we will do in passbook, you will minus the balance. In passbook, you will minus 19,200. From passbook, we will subtract 19,200. हिमानी, आपको कौन हंसा रहा है? My brother. So now coming on to the third transaction. The third transaction is bank charged 150 as bank charges. बैंक ने आपके पासबुक से माइनस कर दिए 150 as bank charges. Your passbook is decreased by 150 because bank has charged bank charges. अगर बैंक ने बैंक चार्जेस काटे, इसका मतलब पासबुक इज डिक्रीज्ड बाय 150. So in passbook, what you will do? In passbook, we will add 150. In passbook, we will add 150. And in the same point, there is one more point. Bank credited interest of 400. Bank credited. Credit of bank means passbook has been increased. Bank credit means passbook has been increased by 400. So passbook is increased by 400 because बैंक को interest मिला है. So passbook is increased. अब आपको क्या करोगे passbook में? You have to make changes in passbook. So passbook you will subtract. क्या करोगे? माइनस कर दोगे to make it equal. So minus 400. मेघना, थर्ड में पहला वाला पॉइंट क्या बोला था कि बैंक ने आपके पासबुक में से बैलेंस काट लिया. बैंक चार्जेस मींस आपका पासबुक का बैलेंस कम हो गया. सो पासबुक का बैलेंस कम हो गया है तो क्या करोगे आप पासबुक में?
to make it equal to the cash book, you will add. पासबुक कम हो गई है तो पासबुक में क्या करोगे, पासबुक में ऐड करोगे. So 150 is added and 400 is subtracted. ओके, हमने सेकंड पॉइंट में एक गलती कर दी है. थैंक यू सो मच शिमानी. कमिंग बैक टू द सेकंड पॉइंट, चेक इशूड फॉर 33,000 इन जुलाई. हमने चेक इशू किए 33,000 के, out of which a check for 13,800 was presented for payment on 3rd August 2016. So यहाँ पर ये बोला है कि a check of 13,800 is presented on 3rd August. It means it is presented after 31st July. The check of 13,800 is presented after July. It means that till July, in the month of July, it is not presented. So, in July, out of 33,000, only 19,800 is presented. 33,000 में से कितना रिकॉर्ड हुआ पासबुक में? 19,800. and 13,800 record nahi hua. It is not presented in July, it is presented in August. So from 33,000, the check is issued for 33,000. But in passbook, only 19,800 is presented. Passbook में कितना present हुआ? 19,800. So the difference 13,000 to 800 is still not presented. 13,800 is still not presented. So what you will do? You will minus 13,800. हमने amount गलत ले ली थी. Amount क्या आएगी? 13,800. So amount will be 13,800. पहले हमने 19,200 लिखा था. So I will explain this with the help of working note. This is cash book. This is passbook. From cash book, you have subtracted 33,000. From cash book, you have subtracted 33,000. But from passbook, you have only subtracted 19,200. पासबुक में से कितना माइनस हुआ है? ओनली 19,200. बिकॉज अमाउंट 13,800 इज प्रेजेंटेड इन अगस्त. जो 13,800 है वो कब प्रेजेंट हुआ है? अगस्त में. इट मीन्स इट इज नॉट प्रेजेंटेड इन जुलाई. जुलाई में तो प्रेजेंट नहीं हुआ ना. सो फ्रॉम कैश बुक 33,000 इज सब्ट्रैक्टेड. From passbook, only 19,200 is subtracted. So passbook में क्या करोगे? You will subtract the balance from passbook. We will subtract 13,800 from passbook. तो हम passbook में से कितना माइनस करेंगे? 13,800. 13,800. Aman, there is nothing to learn in subsidiary book. That is the easiest chapter. Now coming on to the fourth transaction. Third we have already covered. So fourth transaction is a customer directly deposited 2,500 in firm account. एक कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया. इट मीन्स your passbook is increased by 2,500 and it is not recorded in the cash book because customer directly deposited in the bank. So your passbook is increased. Now what you will do in passbook? You will minus 2,500. क्या करेंगे?
मैम माइनस कर देंगे 2500. आरजू, इट इज नॉट एट ऑल हार्ड. चैप्टर हार्ड सिर्फ तब होता है जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते. सो इफ द चैप्टर इज हार्ड फॉर यू, इसका मतलब ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है. चैप्टर कभी भी हार्ड नहीं होता. Your concepts are weak, not the chapter is hard. And the last transaction is bank paid the insurance premium of 1200 as per standing instruction. Thank you, Akash. Bank paid insurance premium of 1200. इसका मतलब बैंक ने पे किया, पासबुक बैलेंस इज डिक्रीज्ड बाय 1200. Passbook balance is decreased by 1200. What you will do in passbook? क्या करोगे passbook में? Yes, Monica, Aditi, Himani and Vijayan, it will be added. क्या कर देंगे? Add कर देंगे 1200. We will add 1200 in the passbook. So this is your solution, guys. This is your solution. This is your solution, and your balance as per cash book is 58,650. क्या balance आया? 58,650. So now tell me, is this question clear to everyone? Akash, most probably it will come for 6 marks, not less than 6 marks. हाँ, आप टोटल से ऊपर लिख सकते हो बैलेंस एज पर कैश बुक. मैंने टोटल के बाद लिखा है, आप टोटल से पहले लिख सकते हो. Crystal clear? Yes. Clear. You're welcome, Akash. Hi, Dark Devil. Clear. Crystal clear. Okay. So now coming on to the second question, which is very, very, very and infinite important. बहुत जरूरी क्वेश्चन है because this is ओवरड्राफ्ट बैलेंस. हमें क्या गिवन है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है. और आज मैं आपको आपकी सबसे बड़ी गलती बताने वाली हूं. Today I am going to tell you the biggest mistake ever you are going to do in this chapter. Because मैंने अभी लास्ट क्लास में जो भी समझाया, बच्चों को समझ आया, no doubt, but they have applied it wrong. Yesterday I got a mail regarding this chapter as a doubt and I got a screenshot of the YouTube channel कि मैम आपने ये समझाया था ओवरड्राफ्ट में बट हमारा आंसर गलत आया है. मैंने सही समझाया लेकिन आपने जो अप्लाई किया दैट इज रॉन्ग. योर एप्लीकेशन वाज रॉन्ग. So now I am going to tell you that how you will solve this question when the overdraft balance as per cash book or as per passbook is given. तो चलिए शुरू करते हैं. Overdraft as per passbook is 40,500 on 30th June. Now let me add another sheet to this, because I am going to write it myself. And please pay attention to this question. If you want to score 6 out of 6, then this question only can help you in scoring 6 out of 6. Now, as you guys know that there are 2 formats in the BRS. हमारे BRS में 2 फॉर्मेट हैं. देयर आर 2 फॉर्मेट. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, हाय उन्नति, अमाउंट and amount. This is the first format.
This is the first alternative of preparing the format. And the second alternative, एक और फॉर्मेट है, दैट इज सीरियल नंबर. हाय यशमित, प्लीज डोंट स्पैम दी चैट बॉक्स. यशमित एक बार लिख लिया ना, इतना काफी है. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम एंड माइनस आइटम. तो आपको यहाँ फॉर्मेट में डिफरेंस पता लगा कि एक फॉर्मेट में मैंने दोनों साइड अमाउंट लिखा है और दूसरे फॉर्मेट में आई एम राइटिंग प्लस एंड माइनस. सो देयर आर टू ऑल्टरनेटिव, देयर आर टू मेथड, अमाउंट एंड अमाउंट. You are writing amount and another one is in which you are writing plus and minus. Now, if you are using my method, which I have explained, and you are using this one, so my method, my explanation will work in this, but it will not work in this method, in this format. So आप लोग क्या कर रहे थे? You were using my technique, you were using my explanation, but you were using this format. आप सेकंड वाला फॉर्मेट यूज कर रहे थे, तभी आपका आंसर नहीं आ रहा था. सो जिन जिन बच्चों ने वो वाला फॉर्मेट यूज किया है, उनका आंसर नहीं आया होगा. आई नो दैट. सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू यूजिंग बोथ दी फॉर्मेट. आज हम क्वेश्चन करेंगे दोनों फॉर्मेट यूज करके, बट आई विल एक्सप्लेन ओनली फर्स्ट टू ट्रांजेक्शंस इन बोथ दी फॉर्मेट. देन मैं सिर्फ एक फॉर्मेट यूज करूंगी. Yes, Imani, I am going to tell you in both the format. So only first two transactions I will explain in both the format. Then I will explain only one format. तो चलिए चलते हैं पहली ट्रांजेक्शन में. Overdraft as per cash book 40,500 on 30th June 2016. So you will write down overdraft as per cash book. Overdraft as per cash book. If you are using the amount column, then आप amount में लिख दोगे 40,500. If you are using this first format, it does not matter that whether the amount is positive or negative. तो वहां पर आपको नहीं देखना. In this first format, you do not have to think about that whether overdraft is positive or negative. But in the second format, you have to look out that whether overdraft is positive or negative. So overdraft means negative balance of cash book. Overdraft means negative balance, unfavorable balance. So I will write it in the minus column. I will write it in the minus column. मैं किसमें लिखूंगी? Minus column में लिखूंगी. If I will write it in the plus column, my whole answer will become wrong. Because overdraft का मतलब ही क्या होता है? Negative. The word overdraft means a negative balance. So you cannot write it in the plus amount. But if you are using the first format, it does not matter that whether you are writing it plus or minus. So therefore, I always prefer the first format. पहले वाले में मैटर नहीं करता, only write it in the amount column. But in second format, it matters a lot. If you will write in the plus column, the whole question will become wrong. The whole answer will become wrong. Now coming on to the second transaction. And here starts the main thing. Check deposited but not yet collected 12,000. Check deposited. In cash book, checks are deposited of 12,000. But it is not presented by bank. It is not presented by bank. So we have to make changes in the cash book and we will make opposite changes. We will do opposite. So we have to subtract it to make it equal. We have to subtract from cash book to make it equal.
but we will do opposite. We will do opposite because the overdraft balance is given. So minus will become plus. Minus will become plus. It is to be subtracted. You have to minus it, but we will do opposite because overdraft is given. Yes, Vijayan, in the first, it will be amount details. So we will add 12,000. We will not subtract it. Those who are saying minus, your answers are wrong. We will add 12,000. Now, how I will write it down, how I will note it down in the format. In the first format, I will only write down that add check deposited but not cleared. Check deposited but not cleared. I will write it in the inner column. I will add 12,000. I will add 12,000. Priyanshu, if this is confusing, then you have to watch the session from beginning because this I have explained in my previous session. The use of hands I have explained in the previous session. I'm not going to explain that. I am going to explain the format only. So, if you have deposited check in the cash book, it is not cleared in the passbook. So, it is to be subtracted to make it equal. You have to subtract to make it equal. But as overdraft balance is given, instead of subtracting, you will do opposite, you will add. हम माइनस नहीं करेंगे, हम लोग उल्टा करेंगे, अपोजिट करेंगे, we will add the transaction. So in the first format मैंने लिख दिया add check deposited but not cleared and मैंने inner column में लिखा add 12,000. Now you guys are going to tell me that where you will note it down in the second format. अब आप लोग मुझे बताएंगे कि सेकंड वाले फॉर्मेट में मैं इस ट्रांजैक्शन को कहां लिखूंगी. So come on, tell me. प्लस में ही लिखेंगे. ओके, अदिति इज ऑल्सो सेइंग प्लस में ही लिखेंगे. प्लस में जागृति. तो यही तो गलती है जो आप लोग करते आ रहे हो. That's your mistake and here I have catch your mistake. So आपने मैथ्स में किया है कि माइनस माइनस प्लस होता है. मैथ्स में पढ़ा होगा ये माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है. ये तो हमने मैथ्स में बहुत बार पढ़ा है बचपन में. माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस. सो इफ आई विल राइट दिस इन दी प्लस कॉलम तो ये माइनस प्लस विल बिकम माइनस और मुझे तो प्लस करना था. अगर मैं 12,000 को प्लस कॉलम में लिख दूंगी तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और मुझे क्या करना है, प्लस करना है. So this is to be added. ये तो हमें पता है कि इसको ऐड करना है और हम लिख रहे हैं प्लस कॉलम में जो कि गलत है. It is to be added and you will not write it in the plus column. You will write it in the minus column. क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है. If you will write it in the minus column, then only it is added to the balance. तो ये गलती थी जो आप लोग कर रहे थे. Therefore, in every answer of mine, I have used the first format only. So now it's your choice. You want to use the second format, but for me, second format is very confusing. Therefore, I prefer only the first format. So now I have explained that what was the mistake that you all were doing. Who invented second format? I don't know. So it's all on your choice. Some prefer the first one, some prefer the second one. सबके likes dislikes same नहीं होते. If you like the second one, go and use that. मैम हमें तो हमारी मैम ने सेकंड में ये नहीं बताया माइनस माइनस प्लस होता है. मैम ने नहीं बताया ना, बट मैंने बता दिया
क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप ये सोचो यार मैम ने जो मेथड बताया है शीतल मैम ने, उससे आंसर तो आ ही नहीं रहा। सो आंसर इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो हमें प्लस करना है और आप प्लस आइटम में लिख रहे हो। 12,000 प्लस करना है आपको पता है, और आप उसको प्लस कॉलम में लिखोगे तो वो प्लस नहीं हो रहा, वो एक्चुअल में माइनस हो रहा है। सो अगर कोई आइटम ऐड करना है तो उसको माइनस में लिखो, तभी वो ऐड होगा, और अगर कोई आइटम माइनस करना है तो उसको प्लस में लिखो, तब वो माइनस होगा। सो नाउ इट्स ऑल अप टू यू. You can use any method. I am not forcing you to use a particular method. How many marks? It will cover 6 marks. It will cover 6 marks. So now I am rubbing this second format and we will do the whole question using the first format. Now coming on to second transaction. Check issued but not yet presented for payment, 2,800. Check issued, cash book is decreased by 2,800. But in passbook, it is not presented. So what you will do in cash book? क्या करोगे cash book में? अरे मैम ऐड कर देंगे. We will add in the cash book 2,800. And opposite of add will be minus 2,800. Opposite of add will be minus 2,800. Yes, Navjeet, you can use any method in the exam. You will get full marks. So we will subtract 2,800. Yes, Monica. So let's check issued but not presented. I am not writing it full. We will subtract 2,800. हम लोग माइनस कर देंगे 2,800. Next transaction is bank charges 50 and interest on overdraft are charged by bank. बैंक ने आपके अकाउंट से काट लिए 50 रुपीज फॉर बैंक चार्जेस एंड 250 फॉर इंटरेस्ट. बैंक हैज चार्ज 50 फॉर बैंक चार्जेस एंड अगेन 250 फॉर इंटरेस्ट. सो व्हाट यू विल डू इन कैश बुक? क्या करोगे कैश बुक में से? यू विल माइनस 50, यू विल माइनस 250. In cash book, you will minus 50, you will minus 250, and opposite of minus will be add. So you will add 50, you will add 250, you will add total 300. मैम करेंगे तो दूसरे वाले में लिखेंगे ना, अपने उसमें कैसे लिखेंगे? हिमानी समझ नहीं आया. मैम माइनस करेंगे तो दूसरे वाले में अमाउंट में लिखेंगे ना, उसमें नहीं. हिमानी आप इनर कॉलम में ही लिखोगे, आप टोटल भार वाले में लिखोगे. पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर समझाते हैं. सो फ्रॉम पासबुक 300 इज सब्ट्रैक्टेड. इन कैश बुक हमें माइनस करना है टू मेक इट इक्वल. फ्रॉम कैश बुक यू विल माइनस टू मेक इट इक्वल, बट दिस इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस, सो यू विल डू अपोजिट. You will add 50 and add 250. So add bank charges 50 and add interest on bank overdraft 250. We will add. Coming to the next transaction, a customer directly deposited 1,200 into the bank. A customer directly deposited in the bank. Your passbook is increased. Your passbook is increased. What you will do in cash book? You will add to make it equal. In cash book, you will add to make it equal. Opposite of add is minus. Opposite of add is minus. Opposite क्यों होता है? क्योंकि जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है ना, वो नेगेटिव होता है. ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो आप इसीलिए अपोजिट करते हो. सो वी विल सब्ट्रैक्ट 1,200. नवजीत, यू विल डू अपोजिट.
Instead of adding, you will do minus. And the last is, so we will subtract 1200. This is directly deposited into bank. And the last is insurance premium 1500 paid by the bank. Insurance premium paid by the bank. Your passbook is decreased. Your passbook is decreased by 1500. What you will do in cash book? क्या करोगे cash book में? Minus कर देंगे to make it equal. From cash book we will minus to make it equal. Opposite of minus is add 1500. Opposite of minus is add 1500. So insurance premium, add 1500. Now we have written down all the add item. We have written down all the subtract item. So now you will write the total of add in the outside column. अब हम हिमानी total amount बाहर लिखेंगे. So 12,000 plus 300 plus 1500. 12,000 plus 300 plus 1500. You will add 13,800. जो total add का आया वो 13,800 आया. So add in the balance 40,500. इसमें add कर दोगे. It will be 54,300. It will be 54,300. And then you will subtract the total 2,800 plus 1,200. It will be 4,000. ये minus कर दोगे. Your answer is 50,300. And this is overdraft as per passbook. This is overdraft as per passbook. This is overdraft as per passbook. यही मैं आपको इस वाले फॉर्मेट में दिखा देती हूँ, बिकॉज इसी क्वेश्चन में आप ये फॉर्मेट देख लो. जो प्लस वाले आइटम है, जो भी प्लस वाली अमाउंट है, वो आपने माइनस साइड लिखी है. The item, the amount that is to be added, जो add वाली अमाउंट थी वो आप माइनस आइटम में लिखोगे, क्योंकि जब आप माइनस में लिखोगे तभी वो ऐड होगी. और जो माइनस वाली आइटम है वो आपने प्लस वाले साइड लिखी है, क्योंकि जब आप प्लस साइड लिखोगे तभी वो ऐड होगी. Then do the total of minus side and subtract the total of plus. So minus का total आया 54,300, plus का total आया 4,000. So the difference between both is 50,300. जो difference आया balance as per passbook, this is 54,300. ये है आपका solution. I have explained the both format. Now it is up to you that which one you want to use. अब आपको देखना है कि आप कौन सा फॉर्मेट यूज करना चाहते हैं. You're welcome, आकाश. So शायद ही आपको ये टीचर कोई बताएगा कि अगर आप माइनस कॉलम में लिख रहे हो, if you are writing an amount in the minus item, you are not subtracting it, you are adding it. अगर आप माइनस में लिख रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि आप माइनस कर रहे हो, आप उसमें ऐड कर रहे हो, क्योंकि जो ऊपर वाली अमाउंट है वो ऑलरेडी माइनस है. एंड माइनस माइनस इज ऐड गाइस, माइनस माइनस इज ऐड. तो अगर बैलेंस भी माइनस है और आप भी माइनस में लिख रहे हो तो वो माइनस नहीं हो रहा, वो ऐड हो रहा है. अगर यहाँ पर फेवरेबल बैलेंस होता, यहां पर लिखा होता 40,500, देन इट इज माइनस. अगर बैलेंस फेवरेबल होता तो वो माइनस हो रहा होता, देन इट इज सब्ट्रैक्टेड. बट इफ यू आर हैविंग ओवरड्राफ्ट बैलेंस, योर बैलेंस इज रिटन ऑन द नेगेटिव साइड and the amount is also written on the negative side, then these two are added. ये दोनों add हो रहे हैं, माइनस नहीं हो रहे. So I hope that this is now clear to everyone.
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. And here we have our next question. This is NCERT question, and as you guys know that NCERT questions are very important because this is assume and this is a true fact that CBSE always consider NCERT question for preparing the question paper. तो NCERT question बहुत जरूरी होते हैं. So हो सकता है यही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए. Then thank me later for that. But let's start this question now. From the following particulars, prepare a bank reconciliation statement showing the balance as per cash book. Himani, this is digital India, guys. You don't need the hard copy of NCERT. Go to Google, type NCERT questions and you will get in 2 minutes. आप डिजिटल इंडिया में होके ऐसी बात कर रहे हो, ऐसी शोभा नहीं देता ना. सो प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंस एज पर कैश बुक. आपको बैलेंस शो करना है कैश बुक का. एंड बैलेंस ऑफ पासबुक इज गिवन 50,000. इट्स ओके हिमानी, आई वाज जस्ट किडिंग. सो बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन 50,000. हमें किसका बैलेंस गिवन है? पासबुक का बैलेंस गिवन है. हम किस में चेंजेस करेंगे? हम लोग पासबुक में चेंजेस करेंगे. हाय नेचुरल ब्यूटी, थैंक यू सो मच. मेरे भी फैन है, आई कैन बिलीव दैट. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन नाउ एंड प्लीज मेक श्योर दैट वी आर मेकिंग चेंजेस इन द पासबुक बिकॉज द बैलेंस ऑफ पासबुक इज गिवन. So you guys will tell me the answers now. First, 2 checks of 2,000 and 5,000 were paid into bank, were deposited into bank, but were not credited by bank. We have deposited 2 checks of 2,000 and 5,000. हमने 2 चेक डिपॉजिट करे, one of 2,000, one of 5,000. What you will do in passbook? क्या करोगे पासबुक में? What you will do in passbook, Priyanshu? Balance of passbook is given. तो in passbook हम लोग कर देंगे add. We have to make changes in the passbook. So we will add 7,000. We will add 7,000 in the passbook. Well done, Himani, Aditi, Navjeet. पर आप लोग बहुत चालू हो, आप मेरे बोलने के बाद आंसर देते हो. दिस इज चीटिंग. मेरे बोलने से पहले आंसर देना है. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज, हिमानी ने पहले दिया था बट नवजीत ने मेरे बाद दिया है. A check of 800 which was received from the customer was entered in the cash bank column of the cash book but was omitted to be banked. आपने कोई चेक रिसीव किया जो कि रिकॉर्ड कर लिया गया है in the cash book. You have received a check from a customer and it is recorded in the cash book, but it is not recorded in the passbook. Well done, Monica. Well done, Vijayan. Well done, Natural Beauty. We will add in the passbook. We will add in the passbook. चलो थोड़ा बहुत तो समझ आया आरजू. मेरी मेहनत थोड़ी रंग लाई. हाँ, आपने पहले दिया इस बार आरजू. I am not saying anything. मैंने कुछ भी नहीं बोला. मैंने यही बोला आपने पहले दिया. Coming to the third transaction, check for 10,000 were issued into bank in November 2014, but not credited by the bank. There is some error. Issue किया तो माइनस होना चाहिए. एक मिनट. So प्लीज मेक सम चेंजेस. यहाँ पर होगा चेक फॉर 10,000 वर इशूड बाय बैंक बिकॉज इट इज इशूड बाय बैंक
and it is not debited by the bank. So आपने चेक इशू किया, कैश बुक से माइनस हो चुका है 10,000. What you will do in the passbook? क्या करोगे पासबुक में? Yes, natural beauty. It will be debited. Well done, Vijayan. That's why I said there is some error. It will be debited. It is written credited here. So check for 10,000 were issued. So cash book has decreased by 10,000. What you will do in passbook? क्या करोगे पासबुक में? We will minus 10,000. तो हम पासबुक में से माइनस कर देंगे 10,000. And the last transaction is interest on investment 1,000 collected by bank appeared in the passbook. Interest collected by bank. Your passbook is increased. Interest collected by bank, your passbook is increased. Now what we will do in passbook? क्या करोगे passbook में? We will subtract. We will subtract to make it equal. So 1,000 will also be subtracted. मैम पर एडलेस वाले में थोड़ी स्पेस पहले से देनी होगी. हाँ, अगर आप अमाउंट वाला फर्स्ट फॉर्मेट यूज कर रहे हो हिमानी, तो आपको उसमें स्पेस छोड़नी पड़ेगी. सो दिस 1,000 विल बी सब्ट्रैक्टेड. This 1,000 will be subtracted. So here you can see the answer, guys. प्रियांशु, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो अनफेवरेबल था, उसमें हम अपोजिट कर रहे थे, और ये वाला फेवरेबल है. समझा तो दिया. तभी हमने अलग अलग क्वेश्चंस लिए थे. लास्ट वाले में अनफेवरेबल बैलेंस था, ओवरड्राफ्ट था, और इस वाले में फेवरेबल बैलेंस है. आर्ची, हाय, द टॉपिक गोइंग इज द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. द चैप्टर BRS is going on. So now you will do the total of plus side and you will subtract the total of minus side. The difference is your balance as per cash book. आपका balance as per cash book is 46,800. Balance as per cash book 46,800. हिमानी, यहाँ पर एड लेस ये दो आइटम्स ऐड हुए हैं और ये दो आइटम माइनस हुए हैं. यहाँ पर तो सिंपल है क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट थोड़ी है. यहाँ पे 7,800 ऐड हुआ है. These two items are added. These two items are subtracted. Archie, it is not at all deleted by CBSE. It may happen that your school has deleted that chapter, but officially it is not deleted by CBSE. So now tell me, is this chapter clear to all my students? Okay, natural beauty. आपने दिशा मैम को देखा होगा ना? Clear, Vijayan? So this chapter is finally done now. हमने final revision कर ली है इस chapter की, and I request you all to please revise 3 or 4 questions more from your textbook. तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अभी ये ताजा ताजा है, गरम गरम है दिमाग में. तो आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक से खुद से 2-3 क्वेश्चन करने हैं ताकि ये और स्ट्रांग हो जाए. उसके बाद आप डायरेक्टली एग्जाम में जा सकते हैं. पर जो क्वेश्चन नहीं करेगा उसके कॉन्सेप्ट धुल जाएंगे और गायब हो जाएंगे. So that's it for today. We have finally done one another chapter with previous year questions. And if you guys want more such question of BRS chapter, then go and take this pro subscription right now with all these amazing benefits. The actual price of this pro subscription is 3,499 for 1 month. But right now we are providing flat 20% discount, after which you have to pay only
2799. So go and take your pro subscription right now for class 12. अगर आपको class 12 में हमसे पढ़ना है और ऐसे अच्छी क्लासेस और अटेंड करनी है तो अभी जाइए और लीजिए pro subscription flat 20% discount पे. The code which you can use is SC Pro. Now for upcoming notes and session, you can subscribe to our channel Vedantu Commerce. जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो. एंड यू गाइस कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप वेदांतु कॉमर्स. अगर आपको ये सारे नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो जल्दी से जाके ग्रुप को ज्वाइन करें. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. So this is your maths schedule. You will be having your maths classes on alternate day at 11 a.m. in which you will be having Menti quiz. So now see you all in the next session of the Bills of Exchange chapter. नहीं, मैं भूली नहीं थी मेहमानी मेघना. मैंने ना I searched the song Yari and there were 4 songs. यारी के 4 सॉन्ग थे. एक था निक्का with Avneet, and there were 2-3 more songs by the same name, so I got confused that which one to listen. कौन सा गाना याद करूं मैं? तो मुझे आप एग्जैक्ट बता दो that who is the singer, who is the composer of that song. वरना यार 4 गाने याद करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा. निक्का, okay, the first one. So I will do that tomorrow क्योंकि yesterday I got confused. There were 4 songs, बहुत सारे थे. So मुझे समझ नहीं आया कि कौन सा वाला सुनना है. All the best, Vijayan. Scored good marks and make me feel proud. Hi Safi, I am all good. Thank you Natural Beauty, thank you so much. I will wait for you. So thank you everyone for watching this session. I hope that you all enjoyed this one and it was really helpful. So do share this video. And do like this session if you have not liked it. And go and subscribe our channel for more such classes. Now see you all tomorrow at same time at same place 4 p.m. Till then, take care, good night and have sweet dreams. And one more news that if you guys want to know that what we should do and what we should avoid in the boards exam, in the accounts exam, then you can join me tomorrow at 6 p.m. अगर आप जानना चाहते हैं कि हम अकाउंट्स के फाइनल एग्जाम में क्या चीजें करें और क्या चीजें ना करें, if you want to know the do and don't, then join me today at 6 p.m. live and I will be telling you some important things about boards, your final accounts exam. So मिलते हैं आज 6 बजे with one of the most important topic, the do and don't of accounts final exam. So see you all at 6 p.m. tomorrow. Catch me live at the same channel at 6 p.m. Till then, bye-bye. Take care. You're welcome, Archie. You're welcome, everyone. See you all at 6 p.m. again.